क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आज, सही है। Evaluate whether this elasticity data is sufficient to allow the management of the hotels to take promotional decisions. सही है। Evaluate whether this elasticity data is sufficient to allow the management of the hotels to take promotional decisions. 12 mark. So do we need to write a one-sided answer or a two-sided answer? टू साइडेड लिखेंगे ना। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, हाउ इज इट, मतलब हाउ इज इट सफिशिएंट, क्यों प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके लिए हेल्प करता है प्रोमोशनल स्पेंडिंग के डिसीजंस में, और व्हाई वुड इट नॉट। फेवर में भी लिखना पड़ेगा, अगेंस्ट में भी लिखना पड़ेगा, और फिर हमें कंक्लूजन भी लिखना होगा। वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। सो और इंट्रोडक्शन में क्या डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आई कैन डिफाइन प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लिख सकते हो या मैं लिखवाऊं, क्या कहते हो? पॉइंटर्स बनाऊं ये लिखूं? क्वेश्चन 4 लिखवाऊं? चलो लिखो लिखो फिर। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में प्रोमोशनल ना, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड फास्ट रखूंगा, तुम लोग भी थोड़ा सा राइटिंग स्पीड तेज रखना, सही है। प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मेन ऑब्जेक्टिव ये है लिखवाने का कि यू शुड एक्चुअली कैच कि सर लिखते कैसे हैं, 12 मार्कर में हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पैराग्राफ स्टेट कैसे होता है, फिर उसके ऊपर हम क्या डिस्कशन करते हैं। और जाहिर है अभी जो हमने केस पढ़ा है वो केस थोड़ा छोटा सा केस है, इतना बड़ा केस नहीं है, बट वी नीड टू नो दैट आंसर लिखवाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लिखवाते लिखवाते आप उसकी टेक्निक्स पे फोकस रखो, टेक्निक्स को ऑब्जर्व करो कि सर के लिखने का स्टाइल क्या है, शुरू कैसे करते हैं नेक्स्ट टाइम, ताकि वही टेक्निक्स तुम लोग चला दो, समझे। तो मेन लिखने के लिए सिर्फ नहीं लिखते, टेक्निक्स को ग्रिप करने के लिए लिख रहे होते हैं। प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, promotional elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded promotional elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded. Promotional elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded with a given change in promotional spending. Promotional elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demanded with a given change in promotional spending. फुल स्टॉप के बाद अब नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ आई नीड टू राइट। अब एक पैराग्राफ मुझे इसकी फेवर में भी लिखना है, दूसरा पैराग्राफ इसके अगेंस्ट भी लिखना है। पहले मैं लिखूंगा कि हाँ यार कैसे जो है प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे प्रोमोशनल डिसीजंस या प्रोमोशनल स्पेंडिंग्स डिसाइड करते वक्त हेल्प करता है, और फिर मुझे बताना होगा कि व्हाई वुड प्रोमोशनल इलास्टिसिटी माइट नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू टेक दीज डिसीजंस अबाउट द प्रोमोशनल स्पेंडिंग। सही है, नहीं समझ आए बीच में आप मुझे रोक सकते हैं और क्वेश्चन लिख सकते हो चैट पर, सही है। फुल स्टॉप के बाद the promotional elasticity of demand the promotional elasticity of demand is one of the major tools and information which is used by the organizations such as MHC. The promotional elasticity of demand is one of the major tools and information which is used by the organizations such as MHC when taking promotional decisions. When taking promotional decisions. कैसे हेल्प करता है वैसे?
how this promotional elasticity of demand वाली information actually helping an organization to take the promotional decisions, कैसे? मतलब क्या ऐसा पता चल जाता है आपको प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने से, कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है भाई कि आप जो है वो डिसीजन लेते हो कि प्रमोशनल स्पेंडिंग बढ़ानी है नहीं? क्योंकि आप जब प्रमोशनल, यस डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, गुड, इज इट इलास्टिक और इन इलास्टिक, आपको पता चल जाता है कि क्या वो प्रमोशनल, गुड यार, क्या आपको प्रमोशनल स्पेंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बेस्ड ऑन द प्रमोशनल इलास्टिसिटी. बिकॉज इफ इट इज प्रमोशनली इन इलास्टिक देन दैट इन इलास्टिक प्रमोशनल जो भी हमारी, सॉरी, इन इलास्टिक अगर है तो इन इलास्टिक होने की वजह से वी कैन डिसाइड that we do not want to invest or spend more on the promotional spendings because it's promotionally inelastic. The demand is not much responsive to the change in promotional spending, and therefore we should not increase the promotional spending. And same goes for a promotionally elastic thing जो कि ये restaurants हैं. समझ आ रहा है? तो और होटल्स, क्या हमें इसमें से एग्जांपल्स देनी होंगी? क्या हमें बताना होगा कि होटल जो है वो प्रमोशनली इनइलास्टिक हैं तो उसके ऊपर हम प्रमोशनल स्पेंडिंग ज्यादा नहीं कर रहे होंगे, एंड एट द सेम टाइम आई, समझ आ गया ना? मैं लिखवाता हूँ, लिखो लिखो, एक मैं लिखवाता हूँ फुल स्टॉप के बाद. क्या लिखा हमने? The promotional elasticity of demand is one of the major tools and information which can be used by the organization such as MHC when taking promotional decisions. This is because if the demand is considered promotionally inelastic, if the demand is considered promotionally inelastic, such as in hotels, the demand did not respond much. This is because if the demand is considered promotionally inelastic, such as in hotels, and the demand did not respond much, so it will be suggested to cut down the budget of promotional spending for this segment of MHC, whereas as it can be seen that the demand for restaurants, as it can be seen that the demand for restaurants is what? The demand for restaurants is promotionally, elastic. Good. The demand for restaurants is promotionally elastic with a significant नहीं, कितना परसेंट डिमांड बढ़ी थी मेरी? With a 50% increase in demand, when the promotional spending whereas it can be seen that the demand for restaurants is promotionally elastic with a 50% increase in demand when the promotional spending increased by, कितने से बढ़ाई थी हमने promotional spending? 50% हमारी डिमांड बढ़ गई थी, बट स्पेंडिंग हमने बढ़ाई थी 25% ना? No need to show the calculations, we can just tell the percentages if you like. Percentages बता रहा हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा relevant हो जाए केस के साथ. Whereas it can be seen that the demand for restaurants is promotionally elastic with a 50% increase in demand when the promotional spending increased by 25% and
This will suggest this will suggest what? कि क्या हमें इसको this will suggest that the promotional spending can be increased, that the promotional spending can be increased, that the promotional spending can be increased for this segment of MHC, for this segment of MHC. Yes, and ये भी लिख सकते थे, बहुत अच्छे, that more of the promotional budget should be allocated towards the restaurants. Very nice. Yes. हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था MHC का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं आज. ये हो गया कॉपी? अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट बताएं कि व्हाट आर द why would the promotional elasticity not suffice for the decisions about promotional spending? वो मैं करता हूं, मुझे बताओ कि apart from promotional elasticity of demand, what are the other pieces of information that they should also be considering? The pest factors, environmental factors, very nice, competitive conditions, economical, economic factors. What qualitative data? Specific होना पड़ेगा, specific. Past data का क्या मतलब? Past data क्यों? इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी देखते हैं. अगर बहुत ज्यादा महंगाई हो रही होती है तो शायद हमें पता है कि, क्योंकि प्रमोशनली हो, ये भी तो हो सकता है कि आपका प्रमोशनल कैंपेन ही सही से डिजाइन ना हो, या आपने प्रमोशनल स्पेंडिंग तो सही की थी लेकिन मसला ये हुआ कि हालात ही मुल्क के ऐसे थे कि उस वक्त डिमांड नहीं रिस्पॉन्ड करी. सोशल फैक्टर्स में चेंज था, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे. वेरी नाइस. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? फाइनेंस भी हो जबरदस्त. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस, क्योंकि है ना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बिजनेस है, बजटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस प्रमोशनली इलास्टिक प्रोडक्ट चला रहा हो लेकिन स्टिल आप उसको प्रमोट ना करो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है. ये तो इस तरह ये भी रीजन हो सकता है. इंडस्ट्रियल चेंजेस भी रीड किए जाते हैं. क्या बहुत हैवी पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है. सीजन चेक कर सकते हैं, बहुत आला. अगर कोई सीजन होटल्स के लिए ऑफ सीजन चल रहा है तो शायद हम उस टाइम में उसको प्रमोट ना करना चाहें. वेरी नाइस. समझ आ गया ना? गुड यार. और अगर कोई भी हम एक दो अच्छी बातें कर दें कि why would the promotional elasticity of demand not be sufficient enough to take the promotional decision, I need to write this angle. I need to write that why would the promotional elasticity of demand not be the sufficient piece of information when taking promotional decisions. तो अब देखो मैं इसको लिखता कैसे हूँ. Apart from promotional elasticity of demand, apart from promotional elasticity of demand, apart from promotional elasticity of demand, there are several other pieces of information. There are several other areas and information which will apart from promotional elasticity of demand, there are several other areas and information. There are several other areas and information which should be considered when taking promotional decisions. MHC should consider the changes in the environmental factors such as GDP per capita,
इनकम से इनका बड़ा गेम है ना, क्योंकि अगर जीडीपी पर कैपिटा कम हो रहा है और इनकम लेवल्स कम हो रही हैं तो फिर हो सकता है कि नहीं, तो कंक्लूजन में लिखूंगा कि कंक्लूजन में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, क्या मेरे हिसाब से सिर्फ काफी है वो नहीं है। MHC should consider the changes in environmental factors such as GDP per capita, economic cycle, changes in competition, and the seasonal factors as well. As hotels is a promotionally elastic division. डिविजन भी अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, सेगमेंट भी कहते हैं, डिविजन भी कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर भी कह सकते हैं. As hotels is a promotionally elastic division. Promotionally elastic था, inelastic था, sorry. Inelastic, sorry. As hotel is a promotionally inelastic division. As hotel is a promotionally inelastic division. अब बताओगे कि प्रमोशनल स्पेंडिंग इसमें फिर भी कब हम करेंगे? वैसे तो प्रमोशनल स्पेंडिंग हम नहीं करेंगे जनरली, हमारे माइंड में आएगा कि यार ये तो प्रमोशनली इनइलास्टिक है तो हमें इस पे प्रमोशनल स्पेंडिंग नहीं लगानी चाहिए. बट व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन द बिजनेस विल स्टिल डिसाइड टू इन्वेस्ट मोर ऑन प्रमोशनल स्पेंडिंग? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस दो मुझे कि वैसे तो हम प्रमोशनली इनइलास्टिक हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि हम इस सिचुएशन में भी फिर भी प्रमोशनल बढ़ाने की सोचें? व्हाट सीजनल इफेक्ट हो सकता है, मे बी हमारा प्रमोशन सही नहीं थी, मे बी कंपेटिटर्स हो जबरदस्त, बहुत कंपेटिटर्स कर रहे हैं, सीजन आ गया है और आपको नजर आ रहा है कि दूसरे अब कंपेटिटर्स भी जो है वो प्रमोशनल स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो हमें भी करनी होगी ताकि हम भी फिर शायद उनसे बेहतर और बताएं. इकोनॉमिक वर्ड, मे बी पिछले साल वो डाउन टर्न था, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी जिस वजह से मेरी डिमांड नहीं बढ़ी थी, तो इकोनॉमिक कंडीशंस ऊपर आ गई हैं, कंपटीशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा हो या मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर हो रहा हो जिसकी वजह से हम अपने आप को और मार्केट कर रहे हो, टूरिज्म बढ़ रहा हो, समझ आए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो और हमें नजर आ रहा हो कि दिस इज द राइट टाइम के फॉरेनर्स आ रहे हैं इस वक्त. क्या बात है यार, जबरदस्त, छा गए आप लोग. गुड. As hotels is a promotionally inelastic division, as hotels is a promotionally inelastic division, there can be situations. As hotels is a promotionally inelastic division, there can be situations when MHC still decide to increase their promotional spending, such as if the income levels or tourism in the country is increasing. सही है. इकोनॉमिक ग्रोथ भी लिख सकते थे, पीक सीजन, ऑफ पीक सीजन भी लिख सकते थे. इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है जो इकोनॉमिक वो होता है ना, बूम, रिसेशन, ग्रोथ, स्लम्प. जो इकोनॉमिक के, जैसे पाकिस्तान इज नाउ पासिंग थ्रू अ डीप रिसेशन, तो रिसेशन के बाद एक स्टेज होता है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रिकवरी या ग्रोथ. और अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए या रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बूम. और अगर इकोनॉमिक बूम के बाद अगर डाउनफॉल हो जाता है तो उस डाउनफॉल को फिर कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन. And if the recession is very prolonged, then this is known as economic slump. सही है. ये वाला पैरा 3 इज अबाउट, ये मैंने लिखा है कि why would the promotional elasticity of demand, यानी कि सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस करके मैं क्यों सिर्फ डिसीजंस नहीं लेता, या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे हम प्रमोशनल इलास्टिसिटी के अलावा इंफॉर्मेशन कंसिडर करते होंगे व्हेन टेकिंग प्रमोशनल डिसीजंस. समझ आ गया? अभी इसका कंक्लूजन बाकी है, यहां तो कॉपी कर लिया. अब इसका मुझे लिखना है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में मुझे बताओ कि क्या कहते हो. इज द प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, द सफिशिएंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कहूं
कि यार इस बिजनेस के लिए प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वही क्या कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, या आप क्या समझते हो कि इनको बाकी और भी फैक्टर सोचने चाहिए हैं? क्या मैं इसका जो कंक्लूजन है वो अपने क्वेश्चन के फेवर में लिखूं या अगेंस्ट में लिखूं? व्हाट डू यू थिंक? शुड आई राइट इन फेवर कि हाँ यार प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिट सीन है, बस देख के फैसला कर लो, या मैं अगेंस्ट में लिखूं कि नहीं यार ये आप पागल हो गए भाई, पहले सारी इंफॉर्मेशन देखो, अदर फैक्टर्स भी देखने चाहिए? डेफिनेटली अगेंस्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिकॉज सिर्फ, हाँ ठीक है, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कोई भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम जब पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़े होते हैं, और उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करके हम कहते हैं कि प्राइसिंग डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वहां भी मैं अगेंस्ट में हो जाता कि हाँ भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कंसिडर करते हो व्हेन टेकिंग द प्राइसिंग डिसीजंस, बट दिस इज नॉट द ओनली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर मेकिंग द प्राइसिंग डिसीजंस, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। यू हैव टू कंसिडर कंपेटिटिव कंडीशंस, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं, आपकी मार्केट पोजिशन में कुछ चेंजेस आते हैं, यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। कोई भी एक सिर्फ समझाने का मकसद ये है, इसके हम अंदर लिख भी सकते हैं कि कोई भी एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट द सफिशिएंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग द मार्केटिंग डिसीजंस, वी हैव टू कंसीडर ऑल अदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा। सही है, ये लिखेंगे ना बोथ कि यस प्रमोशनल, लेकिन सवाल ये है कि इज सफिशिएंट टू अलाउ द मैनेजमेंट टू टेक द, सो इज इट सफिशिएंट टू एवोलेट? नो नो, दैट्स नॉट सफिशिएंट ना। समझ आया? हमें इस क्वेश्चन के आंसर को वो करना है, मतलब काउंटर करना है या इसकी फेवर में जाना है ना। overall overall i think I think that the promotional elasticity of demand overall I think that the promotional elasticity of demand is not the sufficient information is not the sufficient information for taking decisions about promotional spending, for taking decisions about the promotional spending. Overall, I think that the promotional elasticity of demand is not the sufficient information for taking decisions about the promotional spending. This is because this is because the demand can be influenced for this business. This is because the demand can be influenced for this business due to several other factors. And effective promotional campaigns can be designed. Effective promotional campaigns can be designed if all the information is used collectively. If all the information is used collectively, promotional elasticity alone might lead to wrong promotional decisions. Might lead to wrong promotional spendings. या ये भी लिख सकते थे कि which might lead to the wastage of the marketing budget, which might lead to the overspending of the promotional budget, which might lead to inefficient use of the budget allocated towards the promotional activities. Very nice, promotion budget.
वेरी नाइस, समझ आ गया। लेकिन तरीका सीख लो, जाहिर है अभी और हम थोड़ा सा इसको आहिस्ते आहिस्ते अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे और लिखना स्टार्ट करो ना, तो अब तुम लोग भी आहिस्ते आहिस्ते कंफर्टेबल हो जाओ। तो अब तुम लोग भी लिखने की इस प्रैक्टिस को अपने सबकॉन्शियस या क्या कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में फीड करा दो। इतना ज्यादा लिखा करो कि लिखना जो है ना, उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। जो लास्ट मंथ होता है, जो आखिरी का टाइम होता है, उस आखिरी के टाइम में तो स्पेशली जितना ज्यादा आप लिखने पे फोकस करोगे, उतना आपकी वो रिटन मतलब एक फ्लो बन जाना चाहिए। एक फ्लो बनता है, समझ आए। और वो फ्लो फिर खुद आ जाता है जब एक दफा आप कंफर्टेबल हो जाते हो। बट यू विल हैव टू डेफिनेटली प्रैक्टिस द राइटिंग स्किल्स इफ यू वांट टू रीच टिल दैट पॉइंट। ठीक है, इज इट क्लियर?